investigation sector. Okay, so we'll start the second DLC of Control now. Oops. Okay, it's opening. Explore the investigation sector. I should put down this collectibles. What was that hotline last one? Departure. Jesse / Dylan Faden. Why Dylan? Hello? Anyone here? Guess not. There's a red icon, which means something's amiss. Keystone inspection. Mr. Kirkland, we stopped at Keystone on our way to the target. Like you asked, I'm sending my report directly to you to try and keep a lid on this crewman Morales desertion issue. We didn't find any sign of them here. Given their records, it is possible they have switched teams, like you suspected, but I don't think that's the case. And even if definitely occurred here in Keystone, and I think crewman and Morales got caught up in it. The entire population has vanished into thin air. Reminds me of the ordinary case, but that was just the adults. If I'm remembering the file correctly, this is different. I think our guys are casualties, not the traitors. If it's an awe, it seems to be over. We walked through the whole town, and the only strange thing we noticed were markings on the various buildings. 2 overlapping circles with a dot in the shaded space. Could be underrated. I'll show you the picture when I get back. In the meantime, you should send the team out here to cordon this place off and maybe get the comms guys working on a cover story. Sincerely, Agent Keenum. Missing agents. Mr. Kirkland, here are latest agents confirmed missing, presumed dead from the containment breach yesterday. Agent Jonathan Connor, researcher Erza Cruz, Agent Carolyn Dempsey, Agent Lindsay Macomb, Agent Charles Murray, Agent Derek Shaw. Letters of condolence will be delivered to you to sign prior to sending them to their families. You will be updated as soon as additional confirmations are made. Also, per your request, a network engineer checked how many cases were backed up digitally. Unfortunately, a large number of active investigations were not archived yet, and the only hard copies of reports exist behind the firebreak. They are lost, I'm afraid. Okay, don't be afraid. Seems a lot more crowded than the rest. Burrow tractors. Supplementary materials. Note: miscommunication led to a local coroner examining the body of William Burrow. Burrow William, male, Caucasian. Case number: 33-year-old man found dead on his property. Per police report, remains obtained from coroner's office also include blood, urine, bile, stomach contents, and bone fragments. Autopsy finding: blunt force injuries, head, a laceration, left ear, cheek. Blunt force injuries, extremities, dislocation right knee, complete avulsion to the right upper extremity with associated fracture of the proximal right humerus, extensive trauma, abdominal region, complete avulsion of multiple organs including stomach, heart, liver, pancreas, kidneys, and portions of the large and small intestine, all missing from scene. Conclusion: it is my opinion that Mr. Burrow's death is not the result of a mechanical accident as claimed by authorities. The removal of organ is consistent with animal attack. To the Bureau. Federal Bureau of Control, dash of dash 2019, to whom it may concern, it is with great anger and regret that I tender my resignation as head of investigation for
for the Federal Bureau of Control. I do this in protest of the rampant disregard for my department's maybe welfare. Dash. My staff cannot continue to work in these conditions. Previous requests and warnings have fallen on deaf ears, so I must now rely on my actions to speak louder than my words ever could. I blame this situation on our Dash, who has routinely ignored my requests for assistance in reclaiming the parts of investigation sector lost to Dash lose inside. I will never forget the screams of brave agents begging for us to open that fire break. I will carry that shame for the rest of my days. The Dash has failed his agents. I shall never forgive him for that. Sincerely, William Coughlin. Okay, there's a lot of bad blood. It's not working. Probably a loose power core somewhere. Staffing issue, Mr. Dennis. So yes, there's an increase in all cases, and yes, it would be a good idea to put together a special task force to examine exactly why that is. However, it seems that a tiny little detail has slipped through the cracks. We don't have the time staff. If you expect us to detect, investigate, and process more all cases, you need to give us more people. It's simple math. Between the staff we lost in Hartman thing and the ones who left for other departments like Kirkland quit, we are barely managing to keep up with the workload. Hell, just filing the paperwork for all the altered items we left behind in the sector has been an ordeal. Another thing, and this is going to sound paradoxical, but we have an overcrowding situation. This lobby isn't meant to accommodate a whole sector's worth of staff. We put forward a motion to move investigation to a more suitable location months ago. It better not still be sitting on your desk. The people are getting restless, and as Kirkland's interim replacement, it's your job to handle it. Best regards, Agent Grayson. Fire break, sector head office. Cauldron Lake update to Chief Investigator Dennis. It happened again this third time this year. Some things clearly has it out for our Dash. Could be raccoons. The locals certainly complain about them enough, but why the hell would raccoons keep going after a monitoring station? Doesn't add up. Anyway, I've got a bureau tech going to the site next week to take a look. Next on the list of recurring problems is the staff at the Lake House Research Station. How am I supposed to effectively keep an eye on Dash Lake if they won't let me see any data? Hell, I don't even know what they are researching out there. We need to petition them again to share their info with investigation agents. It's only a matter of time before this Dash hits again, and I want to be prepared. Anyway, if anyone at HQ asks why the Bright Falls report is a little thin this month, tell them it's because we couldn't take any readings. In the meantime, I might invest in some raccoon traps. Sincerely, Agent Estevez. Oopsie. A lot of things to read, huh? Official findings report compiled by Agent Lisa Keenum, external investigator by order of William Coughlin, head of investigation. Summary: Dr. Raya Underhill is a professor at the University of Woodrow in the United Kingdom, where she teaches biology with a focus on botany. Dr. Underhill once worked with the Bureau as a botanist stationed in the research sector of the oldest house. She served with no incidents or demerits and is praised by those who formerly worked with her, including Dr. Darling. Dr. Underhill has no known connections to the para-criminal organizations or any records of breaching her NDAs since leaving the Bureau. Her civilian behavior has been ideal, with the exception of an ongoing personal relationship with Dr. Darling that appears to have begun during their time as co-workers in the research sector and revisited intermittently ever since. Depending on the duration of her work in the oldest house, it may be required to have both parties sign a relationship clearance form. This investigation has found no compelling reason to deny Dr. Darling's request to offer Dr. Underhill an interim position with the aim of finding a solution to the mold threshold issue. Compiled by redacted by order of William Coughlin, head of investigations. Summary: pre-authorization from Mr. Coughlin, Dash was launched into the Dash of Director Zachariah Trench. A recent change in Dash witnessed in Director Trench, including aggressive Dash when Dash with other staff, has been observed. However, this investigation is aimed at interpreting this issue rather than proving it. Notable Dash between Director Trench and Dr. Darling has been witnessed by numerous Bureau staff. Although both declined to meet for an interview on the matter,
Witness accounts suggest that arguments centered on the dimensional research wing and the dash kept inside. However, no evidence exists to confirm Director Trench's dash as anything more than interpersonal disagreement. This investigation has concluded that Director Trench's behavior is not indicative of any dash and that his fitness to lead is not in question. Refer to file dash for full report. So many reports, so many papers, so many letters to open. Trench official warning. Official warning. Federal Bureau of Control, Kirkland. I'm growing tired of your blatant attempts to lay your incompetence at my doorstep. I know you want this to be true, but you are head of investigations. This failure is your responsibility. What do you think would happen? Holding a dangerous specimen in investigations? The containment sector exists for a reason. They are better trained and better equipped for this type of work. In fact, they have admirably taken on certain awe monitoring responsibilities that your staff are no longer capable of. This happens more and more now. And don't think your petty internal investigations have gone past my notice. You are a worm. Everything I've done has been for the benefit of the Bureau. The Prime Candidate program only failed because of Darling. You are both failures plotting against me. You are traitors, but the truth will emerge out of you. You are choosing to become my enemy, Kirkland. You don't want to be. Zachariah Trench, Director of the Federal Bureau of Control. Ooh. More bad blood. Bad blood. Darling investigation compiled by Tim Splatter, Special Agent by order of William Kirkland, Head of Investigations. Official findings report reply to Dr. Casper Darling, internal confidential summary. Pre-authorization from Mr. Kirkland, internal investigation was launched into ethical practices of Dr. Casper Darling, Head of Research, despite the account of anonymous dash regarding inhuman treatment of a dash currently housed in the Bureau. Our official findings regarding this were inconclusive. Numerous obstacles arose during this investigation. The majority of dash sector personnel seemed to be wholly unaware of any such dash contained there. One dash confirmed the dash code name to be dash, but all files pertaining to that name were inaccessible. Being classified under the highest clearance level, investigators were similarly blocked from entering the dash research wing to interview its staff. The matter was further complicated by the lack of clarity on whether non-human paranatural entities warrant humane treatment. While this investigation cannot address any charges against Dr. Darling, we do recommend an investigation into dash research. To R. Dennis from D. Gleason, subject possible lead on the Wake case. Case inquiry. Mr. Dennis, a request came through recently from an FBI agent asking for all our files on Bright Falls, specifically on the disappearance of the author Alan Wake. Per the interagency information exchange agreement, I had some paper pushers gather up a folder of all the pre-approved files. Don't worry, all the inappropriate material is either missing or redacted. But I'm writing to let you know that we received this request from a special agent named Alex Casey. Casey sounds familiar, right? Just give me a minute. Discard. Oh. मैं एग्जैक्टली फॉलो कर रहा था कि कब मेरा मैसेज गया तेरे को, कब वो पीछे ट्यून बजा और फिर कॉल किया, फिर तेरा कॉल उठा। तू ट्यून ट्विच में सुना? हाँ, तो उसमें भी तो डिले होता है। नहीं तो मेरे को समझ में आ गया ना कि अब उठ रहा है करके, लेकिन डिस्कॉर्ड में मैं अभी देखा कि तू कॉल किया था इससे पहले 2 बार। मेरे को एक ही आया। Okay. That's because Alex Casey is the name of the fictional detective in those hard-boiled crime books Alan Wake wrote. Pretty interesting that an FBI agent sharing a name with the most famous character Alan Wake wrote is looking into a case dealing with
a writer's fiction coming true. I think this is worth looking into, but what's your opinion? Just give the word and I will start surveillance on this guy. Special Investigator Gleason. अरे बाप रे, इसमें एलन वेक को भी मिक्स कर दिया क्या? कोई एक केस है जो कि एलन वेक राइटर है और वो जो फिक्शनल जो भी चीज़ राइट किया था वो ट्रू हो गया. अभी उस फिक्शनल स्टोरी में एक एजेंट है केसी नाम का, एलेक्स केसी. वो स्टोरी में है, एलन वेक की स्टोरी में. वो केस क्योंकि कुछ तो उस केस का कुछ पार्ट रियल हो गया, तो इन लोग यहाँ की एजेंसी इन्वेस्टिगेट करने गई थी. कुछ साल हो गया उस बात को. अब एलेक्स केसी कोई FBI एजेंट एलेक्स केसी नाम का इनको पूछ रहा है कि मुझे उस केस की फाइल्स चाहिए. तो ये वही बता रहा है कि इट्स इंटरेस्टिंग कि फिक्शनल कैरेक्टर जो कि उस फिक्शनल स्टोरी में था एज ए FBI एजेंट, सच के FBI एजेंट बन के कॉल कर रहा है. Official findings report, reply the prime candidate program. Per authorization from Mr. Kirkland, internal investigation P1429 was launched into the legality of the prime candidate program by Federal Bureau of Control. Since all known subjects relevant to the investigation used executive privilege to decline interviews, very little first-hand information was gathered. How anonymous sources and documentation declassified by Mr. Kirkland both paint an alarmingly clear picture of systematic dash were brought into the oldest house and placed under dash examination and testing with the aim of appointing one as director upon maturity. This program has produced no successful cases and only resulted in the traumatic dash of paranaturally inclined dash. Not only is this in breach of Ash Act, but it flies in the face of basic human dash. This investigation team unequivocally dashed the prime candidate program and recommends that it be a dash immediately. Closed immediately, probably. वो फर्स्ट वाला DLC तो खत्म हो गया. कितना सारा मैसेज है भाई. Burrow tractor containment procedure. Okay. Item is not in bureau custody. None known. A Frank Ill tractor, olive green, dried blood on the grill. When last seen, item is capable of vocalized responses or growls and unmanned locomotion, considered highly aggressive and dangerous. Background: the item first came to Bureau's attention after the death of William Burrow, owner of Burrow Farm outside of Trenton, Texas. Local authorities arrived on scene after an employee found the mutilated body of Mr. Burrow beneath his tractor. Police arrived but were immediately drawn away by the tractor. Panicked, calls to federal authorities were intercepted by Bureau communication staff. A team was dispatched. Upon arrival, the agents approached the team. It responded by growling like a bear. 3 agents were injured when they tried to detain the item, which escaped. Aerial searches for the item are ongoing. Speaking to Mrs. Burrow only revealed that she had a domestic altercation with Mr. Burrow earlier the night of the incident. Whether these events are connected is currently unknown. What are my assets? What is this shaded fact? Jukebox. Okay. There. Now that gate should open. कितना juxtaposition है पता? Specimen escape assessment. The purpose of internal investigation X0397 is to examine the containment failure of specimen SI1 that resulted in the deaths of dash agents. An inspection report of the containment equipment 3 days earlier showed no faults. Investigators suspect human error to be the cause, yet no department has provided any evidence to support this. Technicians were able to recover the researcher's note on the specimen from internal network. On the dash of dash, the specimen began displaying a sharp increase in aggressive dash. Cross-referencing the date with various logs, found only 2 events inconsistent with this sector daily routine. The air filters were changed first, and second, an hour prior to the incident, and civilian named Alice Dash entered the sector regarding an unrelated investigation. See interview 65F124. Given their connection to the same AOR case, it is likely that Mrs. Dash's presence is relevant to the specimen's escape and to the Dash. Investigation is ongoing. Report to file 6230721 for full report.
Claim control point. I'm no detective, but something definitely Oh happened my here. god, मेरा पढ़ के मुंह दर्द कर देगा. Compiled by agent team अच्छा है Splatter by लेकिन order तेरा of Ray Martinez, chief investigator, paracriminal profile, the Blessed एक्सेंट सही हो organization. जाएगा. Summary: this group individual has operated outside of the bureau's notice for decades, बट तेरे को एक्सेंट perhaps वाला पुश longer, करना पड़ेगा. displaying a level of skill and caution rarely seen in paracriminal groups. A review of past cases has found various mentions of their activity over the years. In 2016, a production company called Blessed Pictures was connected to an altered item case, as well as the death of an agent from exposure to illicit paranatural materials. In 1994, a Los Angeles-based public speaker named Chester Bless was involved in the illegal use of an altered item. In 1988, a business called Blessed Repair and Service was suspected of involvement with an object of power case, perhaps even creating it. Blessed Pictures, Chester Bless, Blessed Repair and Service. None of these business or individuals have ever been located. However, their connections to appearances of altered items and objects of power is too direct to be considered circumstantial. An arrest order has been issued to any person believed to be involved with the Blessed organization. Okay. Oops, 3 बार करना पड़ता है. Actually मुझे देखना है कि यहाँ नहीं जा रहा हूँ. Do we know each other? हाँ, वेक भी आ गया. वाह. This feels familiar. I can't seem to. I've forgotten it. I'm sorry. My name is Alan Wake. Disclaimer: I haven't played any Alan Wake. Is this Alan Wake or Who are you? That is Alan Wake. He's Alan Wake. Jake Gyllenhaal जैसा दिख रहा है वो. Who are you? Do I know you? I'm your friend Tom. Zane. Tom Zane. There's nothing to worry about. Tom. The poet. The diver. You look different. That was just a role, a character. The protagonist I played in my old film. I'm a filmmaker, an auteur like yourself. We're working on this together, remember? An artistic collaboration. You need a drink. Yippish. ये आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन के नाम पे दारू, सिगरेट, गांजा, नशा करने लग जाते भाई. Endless. कुछ भी भसड़ में आ जाते दिमाग में वो लिख देते हैं. Nothing holds still. But we're very close now. You've been writing. You found a way to escape. It'll work this time. Writing. You found a way! No. I don't. Wait. There's something. It's my double. He's out there. I've seen it. Yeah. Nothing to worry about. I'm dealing with it. It's fine, my friend. Let me handle him. You've met him? What the hell? Now, come on. You misunderstand me. That was Alan Wake, the writer who went missing in that AWE case I read about. What's he doing here? And Thomas Zane was with him. The poet. No, wait. He was a filmmaker. I always remember that wrong. अरे ये कुछ डिफरेंट ही हो गया.
ओके ये तो एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है. अरे अब कहाँ जाना? नो नो जाना तो इधर ही है. 1 2 3. ये चालू हो गया था ना. हैं? अरे अरे हाँ ये खुल गया ना. और इस बार ये भी खुला है. सारा म्यूजिक बंद करो यार. Dr. Emil Hartman, devoured by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Broke loose, killed everyone it could, lurking, roaming, waiting. Then something else came. A resonance. The thing that had been Hartman went through another change. इसका आवाज़ तो डार्लिंग जैसे ही है. What's the hotline? Mission. Traverse the Ocean View Motel. Hotline. Hartman's final act. Dr. Emil Hartman was desperate. The Federal Bureau of Control had stolen his life's work. This was his last chance, his final experiment. What he'd been too scared to do before. Hartman dove into the lake, was taken, devoured by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Only an echo of him remained, fragmented impulses on autoplay, violent, bloodthirsty darkness in the driver's seat. Emerging from the lake, the thing was captured by the FBC, brought in, contained, studied. The thing broke loose, killed everyone it could. The FBC fell back and sealed the अबे मेरे पे sector. ये बता. रुक. The thing was alone in the dark, lurking, roaming, waiting. Then something else came. Not darkness, but similar enough. A sound. A resonance. It shouldn't be a surprise. If there's one, why not another? The darkness inside the thing could have been immune, could have resisted, fought, could have been passed by, passed through with no effect. But it didn't, and it wasn't. Maybe it had grown weaker over time, not aged. It was timeless, but weaker with no link to its source. A metamorphosis followed. The thing that had been Hartman went through another change. बोल. मेरे पास एक जेसॉन लिस्ट ऑफ जेसॉन है. बस यहीं ठीक पे है. काम करा ले स्ट्रीम में. बोल. अरे मैं काम नहीं करवा रहा हूँ, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बस. इसका क्या तेरे क्या लगता है क्या इसका होना चाहिए? एक डायरेक्टरी है जिसमें बहुत सारा जेसॉन पड़ा हुआ है. बहुत सारा मतलब 1000 के ऊपर, 1000 5000. ठीक है. तेरे को उसका स्कीमा प्रॉपरली नहीं पता. उसका बेस स्कीमा पता है, लेकिन हो सकता है कि उसके स्कीमा में नेस्टेड भी कुछ हो कीज. ठीक है. अब उसको तेरे को एक डीबी में मतलब आरडीबीएमएस उसमें डालना है. ओके. क्या अप्रोच लेगा? आजकल के आरडीबीएमएस, आजकल के बहुत से आरडीबीएमएस में ना, आरडीबीएमएस में तू डायरेक्ट ऐसे जेसन फील्ड भी स्टोर कर सकता है. स्पैनर देख ले, ओरियन डीबी देख ले, और आई थिंक न्यू वर्जन्स ऑफ पोस्टग्रेस ये सब में पता नहीं मेरे को, लेकिन आजकल डायरेक्ट भी सपोर्ट करते हैं ना. स्पैनर तो मैं जानता हूँ सपोर्ट करते. स्पैनर? ये स्पैनर स्पैनर
ठीक है तेरे काम मेरे व्यूअर्स तो बोर हो रहे प्लानर डीबी स्पैनर प्लानर क्या समझ गया SPANNER अबे स्पैनर गूगल क्लाउड का है क्या यस तेरा क्या लगा मुझे कैसे पता है ऐसा बता जो मैं बता रहा हूँ वो भी पब्लिकली अवेलेबल है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुझे ही अवेलेबल है ना बट बहुत सारे डीबी स्टोर बहुत सारी डीबी अब जेसन स्टोर कर पाते हैं और तेरा इशू क्या है यहाँ पर मेरा इश्यू कुछ नहीं है मैं तो बस चाह रहा हूँ कि कैसे नहीं मतलब तो RDBMS में स्टोर करना चाह रहा था ना तो किस तरीके से स्टोर करना चाहता है मैं चाह रहा था कि पहला जो बेस है जो मेन जो कॉलम से जो मेरे को चाहिए वो डायरेक्टली सेव हो जाए लेकिन एक आध जो कीज होगी जिसमें नेस्टेड होगा वो पूरा का पूरा ऐसा डंप चलते बस एज अ स्ट्रिंग अभी भी नहीं खुला ये वाला एज ए स्ट्रिंग ही अगर तेरे को सेव करना तो वो तो किसी में भी कर सकता है Damn. जब रीड करके उससे जेसन करवा लेना एज Wait for me स्ट्रिंग को to वापस come जेसन here. कन्वर्ट करा अपने बिजनेस लॉजिक में अगर तेरे को सिर्फ ऐसा ही करना है तो जेसन जैसे स्टोर करने वाला डेटाबेस इसलिए देखना चाहेगा अगर तेरे को क्वेरी भी करना है तो उस जेसन डेटा पे स्पैनर और ओरियन डीबी डायरेक्ट ये सब कर सकते हैं मतलब जब तू उनको बता देगा ना कि इस फील्ड में स्ट्रिंग या नंबर के बजाय जेसन स्टोर्ड है तो तू क्वेरी भी कर सकता है उनको अगर तेरे को क्वेरी नहीं करना सीरीज स्टोर ही करना तो स्ट्रिंग सेव कर दे वो तो किसी में भी कर देगा यही मैं चाह रहा था कि इसमें और उसमें क्या फर्क है ओके ठीक है तो नहीं मेरे को क्वेरी नहीं करना है मेरा ऐसा है कि बस वो स्टोर हो जाए अभी के लिए उसके बाद देखा जाएगा तू उसका कॉस्ट्यूम चेंज किया है क्या ऐसा लबादा क्यों टाइप का क्यों पहनी है यस अभी इसके पास बहुत सारा Doesn't look like a house shift. क्या Do I even चक्कर आ जाएगा भाई know? मुझे ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है चलो दिखाता हूँ मैं अभी तो इसके पास बहुत सारा ड्रेस आ गया तो उस समय तो 4 ही था ना जब मैं तो देख रहा था या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव देखिए मेरे व्यूअर्स मैं एकदम अपने व्यूअर्स के लिए कस्टम गेम प्ले खेलता हूँ ना तो मेरे चैनल पे आओ ये तो पुराना वाला है जैनिटर्स असिस्टेंट ये मैं पहना हूँ तेरे को ये पता है क्या ट्विच जो है ना है तेरे जेस्चर्स को रिकॉर्ड करता है जेस्चर्स मतलब हंसी और छींकना और ये सब को Okay. डिस्कॉर्ड नहीं करता डिस्कॉर्ड क्यों करेगा लाइक डिस्कॉर्ड करके करेगा क्या ये सब रिकॉर्ड करके डिस्कॉर्ड नहीं रिकॉर्ड ही नहीं डिस्कॉर्ड करता ना उसको नॉइस हटा देता है ओह हाँ तो डिस्कॉर्ड में सब होगा ओके मतलब जो फिल्टरिंग करता है ना वो ये सब नॉर्मल चीजें भी फिल्टर कर देता है जैसे छींक दिया ना तो ट्विच में छींक आएगा लेकिन इसमें नहीं आता डिस्कॉर्ड में ए सिंक्रोनस सूट ये डायरेक्टर सूट ये आई थिंक गेम खत्म करने के बाद मिला था ये वाला था कि okay. दो डायरेक्टर सूट है ये तो टैक्टिकल अच्छा ड्रेस में सब पता है एस्ट्रल डाइव सूट ये तो पहले से था आई डिडंट लाइक इट बाल अच्छा नहीं रखा ये जो इसका भाई जब वो रहता है ना इनके पास ये तो कैदी टाइप का दिख रहा है तो वही है ना वो Candidate उसका Ps। भाई को P6 रहता है और ये P7 रहती है ऑफिस असिस्टेंट ये जब लास्ट स्टेज में ना ये भी एक ड्रीम में चले जाती है तो उसमें इंटर्न रहती है वो वाला है ये उसी का है क्या ओके अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि ये लास्ट वाला था कि ये लास्ट वाला था आई थिंक ये गोल्डन वाला ऐसे ही मिला था वो डायरेक्टर सूट ही लास्ट वाला था बट वो उसका एंड क्या हुआ मतलब वो जब ड्रीम में चली गई इसके अंदर ही हिस्स चला गया तो उसके बाद उसने कैसे निकला निकलती है उसको पता चल जाता है कि उस हिस्स के अंदर जाने पे उसको पता चलता है कि इस ब्यूरो में हिस्स को कौन लेके आ गया था तो इसका जो लास्ट डायरेक्टर था वही ओपन कर दिया था
डिलन के साथ मिल के, क्योंकि डिलन को भी हिस ले लिए थे। हुआ क्या था, बहुत ज़माने पहले एक AW, ये जो भी इवेंट्स होते हैं ना नॉर्मल वर्ल्ड में, देख एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें हैं, एक है ऑब्जेक्ट ऑफ पावर, एक है ऑल्टर्ड आइटम। ऑब्जेक्ट ऑफ पावर समझ ले सेम टाइप का कैटेगरी है, बट ऑब्जेक्ट ऑफ पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। उसमें एक ऑब्जेक्ट ऑफ पावर रहता है स्लाइड प्रोजेक्टर। उसके कारण ना एक शहर है ऑर्डिनरी, उस शहर का नाम है ऑर्डिनरी, उस सिटी का नाम, वहाँ पर ये दोनों भाई बहन रहते हैं। तो वहाँ पर ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, वहाँ के सारे एडल्ट्स मर जाते हैं ऑर्डिनरी के। कुछ गड़बड़ बेसिकली वो स्लाइड शो गड़बड़ कर देता है ऑब्जेक्ट ऑफ पावर। सो जब वहाँ पर ये ब्यूरो इन्वेस्टिगेट करने आती है तो ये भाग जाती है। उन लोग दोनों भाई बहन को पकड़ते हैं, लेकिन ये कैसे तो भाग जाती है, और उनके पास सिर्फ वो P6 रह जाता है, जो इसका भाई डिलन। उन लोग डिलन को लेके आते हैं, डिलन के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन कुछ स्पेशल है। और ये जो हाउस है ना, ये जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग इज कॉल्ड हाउस। तो हाउस के अंदर ये सब ब्यूरो वाले रहते हैं, जहाँ पर ये सारा काम होता है। तो इस हाउस का एक बोर्ड है, बोर्ड इज एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी, वो इंसान लोग नहीं है उन लोग। और मतलब ऐसे पता करते हैं कि यार डिलन बहुत अच्छा कैंडिडेट है नेक्स्ट डायरेक्टर बनने का। तो वो काफ़ी कुछ, जो करंट डायरेक्टर है वो काफ़ी सपोर्ट करता है, देखता है कि क्या हो सकता है। और जो इसका मेन रिसर्चर है डॉक्टर डार्लिंग, वो भी काफ़ी रिसर्च करता है। फिर दोनों में कुछ बात को लेके अनबन हो जाती है। बेसिकली होता ही है कि अब वापस स्लाइड शो प्रोजेक्टर में जाता हूँ। तो स्लाइड शो प्रोजेक्टर वाले पे क्या होता है कि ना, जब वहाँ पर सब लोग मर जाते हैं ना, ये दो लोग ना कैसे तो बच जाते हैं। एक्चुअली वो स्लाइड शो प्रोजेक्टर एक डायमेंशनल लिंक रहता है, उस डायमेंशन में से ऐसा पावर आवर आता है। लेकिन वहाँ पर ना एक बीमारी भी है जो कि हिस है, हिस नाम की बीमारी भी है। वहाँ पर हिस के अलावा दो और एंटिटी रहते हैं, पोलरिस और एक हेड्रॉन। हेड्रॉन इज द मेन थिंग एंड पोलरिस उसका पार्ट है। तो हेड्रॉन बेसिकली ना हिस को उस डायमेंशन में रोक के रखा है एंड यहाँ पर आने नहीं दे रहा, ठीक है। पोलरिस मतलब हेड्रॉन से एक छोटा सा पार्ट निकल के पोलरिस क्या करती है, ये दोनों की मदद करती है। लेकिन डिलन को तो इन लोग रख लेते हैं, तो पोलरिस सिर्फ इसके पास रह जाती है। और वो जब उन लोग साइड प्रोजेक्टर लेके जाते हैं ना, तो साथ में लोग हेड्रॉन को भी लेके चले जाते हैं। जब उन लोग इधर आते हैं तो डॉक्टर डार्लिंग पता चलता है कि इसके अंदर हेड्रॉन भी है, तो वो हेड्रॉन को रखता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है कि ये है क्या। और ये तो अलग रहती है। फिर ये काफ़ी साल बाद अपने भाई को सर्च करने आती है, तो उसको ये बिल्डिंग पता चलता है। ये बिल्डिंग इससे पता चलता है बिकॉज इसके पास पोलरिस है और हेड्रॉन इसी बिल्डिंग में। तो पोलरिस हेड्रॉन को ढूंढते यहाँ आती है, लेकिन पोलरिस इसको बताई नहीं रहती है। तो ये इसको लगता है कि पोलरिस इसके भाई को ढूंढने के लिए हेल्प कर रही है। वो कर रही है पोलरिस, बट पोलरिस बेसिकली हेड्रॉन का सिग्नल का पीछा कर रहा है। तो जब ये हेड्रॉन को ढूंढती है लास्ट 9th लेवल में, तब इसको पता चलता है कि हेड्रॉन एक्चुअली हिस को रोक के रखा हुआ है। और रोक के तो रखा हुआ था, लेकिन वो इसका जो पिछला जो डायरेक्टर था ट्रेंच, वो हिस को बिल्डिंग में छोड़ दिया, जिसके कारण ये सब हो गया गड़बड़ सड़बड़। तो ये वही सब ठीक कर रही है। उसके बाद इसको पता चलता है कि डिलन को हिस बहुत पहले ही लग चुका था, वो स्लाइड प्रोजेक्टर के टाइम ही लग चुका था वो, या फिर जब वो कस्टडी में था तब, मतलब वो लग चुका था काफ़ी पहले। तो फिर ये बेसिकली जब ये ड्रीम में चले जाती है, तब इसको पता चलता है कि एक्चुअली गेम की शुरुआत में ना इसको दिखता है कि वो ट्रेंच मर गया, जो पुराना डायरेक्टर मर गया, और उसके पास एक गन रखी है। तो इसकी वजह से गन उठा लेती है। तब कुछ फ्लैशबैक दिखाता है, उसको रिसॉल्व लास्ट लेवल पे करता है। तो क्या होता है कि इसके ड्रीम में बार बार ऐसा होता है कि पहले ट्रेंच मर जाता है, डायरेक्टर ट्रेंच, पहले डायरेक्टर ट्रेंच मरता है, फिर से वापस इसका ड्रीम फिर से रिवाइंड हो जाता है, फिर से देखती है तो ये मर जाती है डायरेक्टर बन के, फिर से रिवाइंड होता है, तो इस बार ये जाती है खुद ही ट्रेंच को मार देती है। तो तब इसको समझ में आता है कि एक्चुअली में ये प्री डिफाइंड है कि मेरे को उसको मारना है, बिकॉज यही छोड़ा था इस, और जब मैं इसको मारूंगी तभी मैं पूरी तरीके से डायरेक्टर बनूंगी। तब वो मार देती है। लेवल 10 में इसको रियलाइज़ होता है कि हाँ अब मैं ही पूरी डायरेक्टर हूँ, बिकॉज लेवल 1 में तो बाकी सब मान लेते कि ये डायरेक्टर है, लेकिन इसका आइडिया रहता है कि मैं सिर्फ अपने भाई को ढूंढने आई हूँ। लेकिन लेवल 10 में हाँ मैं ही डायरेक्टर हूँ मान लेती है, और फिर वहाँ से हिस्से निकल जाती है। फिर ये उसके डायरेक्ट हिस्से लड़ाई होता है, ऐसा है स्टोरी। तो सारा कपड़ा देख लिया ना, तो वापस चलें अब।
Yes. Sealed fire break. Abandoned offices. काउंटर स्ट्राइक लगाएगा? लगा सकते देखो देखो मेरे व्यूअर्स, मैं अपने व्यूअर्स के साथ गेम भी खेलता हूँ, लाइक हैं। Yes. काफी ज्यादा काफी collaborative- इंटरेक्टिव हूँ मैं, काफी इंटरेक्टिव स्ट्रीमर Interactive हूँ, and सिर्फ स्ट्रीम collaborative. नहीं करता, सिर्फ कोलैबोरेट और डायरेक्ट एंटरटेन भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ डिजिटली, और वो भी गेम में और वो भी नॉन एडल्टिश। सब डिस्क्लेमर देना हाँ, पड़ता है भाई। अभी तक व्यूअर कम है ना, जैसे ही व्यूअर बढ़ने लग जाएंगे और डिमांड आएगी तो वो भी करना शुरू कर देगा। क्या करना और शुरू viewer कर क्या करना शुरू कर दूंगा? कुछ अनोखा पैसों के लिए मैं करवाते कुछ भी हैं। कर सकता हूँ, कुछ भी। कहाँ है बे? कुछ चीज बच गया जो अभी भी सही सलामत है? Of course. लॉन्च। अरे भगा रे सब बकवास। Piss are already in here. Official arrest report. R. Hartman Emil. Victim names Wake Allen, Anderson Tor, Anderson Odin, Dash, Lane Rudolph, Dizol Wendy, Emerson Thomas, Dash officers name Dennis, Special Agent Remy. Charges Code 4 kidnapping of altered individuals, Code 8 sanction against altered organizations, Code 37 obstruction of bureau investigation, Code 74 breaching of Ash Act. Offenders' property seized as evidence to be used in conjunction with an ongoing OW investigation. Offenders' personal effect have been sent to research for analysis. After being cleared by bureau researchers, all victims have been released. Biannual surveillance orders were assigned to each except the Anderson brothers due to their senility and Wake possibly deceased. Huh. Whoa. Looks like the house has gotten a little wild in here. Personal mods. Oh, I guess. Hello, my feet gossip at night and now I have to wear shoes to bed. Sincerely, me. Wow. Delusion होता है ऐसा. Service tunnel. So I cannot go there. Okay, it seems I cannot. उधर नहीं जा सकता. Okay. अरे भाई पीछे चलना मेरे को. हटो. बहुत मजबूती का जोड़ है, वो टूट ही नहीं रहा. सर्विस टनल जाना पड़ेगा. This अब ये क्या है? door case is blocking the door. So now I have to deal with an interdimensional noise and Aim a powerful sentient light source at the shadows. darkness to destroy it. Aim a powerful light. Yeah, मेरे
पावरफुल लाइट? कहाँ है पावरफुल लाइट? इसे पावरफुल लाइट सोर्स है। Light burns it away, huh? Makes sense. अरे मैं वापस सही वाला कपड़ा पहन लिया। मुझे वो न्यू वाला सूट पहनना भाई, मैट्रिक्स वाला। चढ़ना ऊपर, अच्छा। अरे हाँ, क्वारी में भी ये वाला था यार, मैं तो किया ही नहीं हूँ मैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ये तो मैं भूल ही गया। इसका नाम क्या है? इस एरिया का नाम है ऑपरेशंस कॉरिडोर। आई हैव अ न्यू एस्ट्रल कंस्ट्रक्ट, इज इट? कंस्ट्रक्ट सर्च, नीड वन मोर confiscated motive. Okay, created fast travel to central executive। कपड़ा चेंज करो। क्वारी वाला भी जाना यार, वहाँ गया नहीं था मैं। Outfits, asynchronous suit. Fast travel to quarry. Panopticon, Atlas chamber. Furnace chamber. Black Rock quarry. लेकिन अब ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, कहाँ है। मेरा ही हेल्थ चले जाता भाई।
feel मिल रहा है. It's not like I don't like it. सब यहीं से कहा था. अरे बहुत अरे कहाँ से तो कोई मार दिया. ना 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 ना. छुटपर्रे लोग मार दिए भाई मेरे को. मोल्ड वाला है कहाँ पर? मुझे ये सब पीछे
मैं चाह रहा था जब वो उड़ते उड़ते लैंड करती है ना, तो लैंड करने में भी उसको थोड़ा हीरोइक टाइप देना था कि ऐसे पैर घिसक के, या फिर ऐसे नियो कैसे लैंड करता है वैसे उस टाइप का कुछ. Demonstrator is going to change everything. The work we do there will be brilliant, dangerous, and revolutionary. So we'll need staff that meet the challenge. So far, I'm considering Carla Vaughan, Lorenzo Dune, Howard Tan, Edna Pierce, either Beth Harrington or Abe Lewis if their departments can spare them for a bit. Emily is an obvious choice, but who knows what will come out of the doorways we open. Perhaps it's better to keep her somewhere where the work is less unpredictable, but she won't like that. And there's no way she won't notice a secret new research department. She's too sharp. और क्या क्या मिशंस. हाँ ये है एसेट्स. ये बोल रहा तू. क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या चीज? हाँ इस टाइप का कुछ, मतलब अभी अभी जैसे तू तो किया ना ऐसा, वो नॉर्मली जब लैंड करे ना, ये नहीं ना, वो भी तो थोड़ा सा- ग्रेसफुली लैंड करना भी तो मस्त होता है. क्या तू लॉन्चर ले लिया है? अब तो सब गेम एंड हो चुके हैं भाई. ये सब मेन गेम का पार्ट था. अब सारा मिशन किया, बल्कि एक मिल नहीं रहा मेरे को, एक अनलॉक नहीं हो रहा. उसके सारा मटेरियल है मेरे पास. बग है क्या? पता नहीं, हो भी सकता है. अभी यहाँ पर ये है क्या? Indra, I saw David last night. I was working late in the quarry when he stumbled out from behind some black rock. Looked like hell. I called up to medical right away. He was half starved. He's been missing for 2 weeks, so I guess it's not a surprise. While I was waiting for someone to come help, he kept telling me about some cravings, something about an ancient tree. I couldn't really understand him. When the medics came, they brought security. They grabbed David and hauled him off. They interrogated me for a couple hours about what David told me. Anyway, I know you are on the next shift, so thought I would leave this for you. He was your husband. You have a right to know the way security was acting. Well, I don't know if we're gonna see David again. I'm so sorry, Linda. Burn this after you read it. B. मैं क्वारी ही ढूंढ रहा हूँ, सॉरी मोल्ड वाला, बट ये वो नहीं है. ये उड़ने वाले बहुत परेशान करते हैं भाई. वो लॉन्चर इतना खतरनाक है ना, अगर उस दीवार पे मारूंगा ना मेरे को लग जाएगा मालूम. अगर मैं इस रेंज में खड़ा हूँ, ये देखिए यहाँ मारूंगा भाई, मजा आ गया. हाँ यहाँ मारूंगा अगर मैं, मेरे को लग रहा है मेरा हेल्थ कम हो जाएगा. ये देखिए इतना बड़ा रेंज है ना उसका. अरे साला, और दिखता भी नहीं है. अगर तो कि मतलब स्क्रीन पर ऐसा नहीं दिखा दे कि तेरे को लग गया. हाँ हाँ ये ढूंढ रहा था मैं. तो जब तक तो हेल्थ देखेगा नहीं ना, तब तक समझ नहीं आता कि तेरे को लग गया. एक्चुअली पहले यहाँ नहीं जा पा रहा था मैं, क्योंकि मैं उससे बोला पावर नहीं था. मोल्ड वाला अब है. ये क्या वायलेट क्या है यहाँ पे? मोल्ड देख कितने भी अपना खराब कर. अरे बाप रे, क्या मारा ऐसा? अरे यार ये नहीं मारता हूँ. अरे बाप रे, गजब. उन लोग से ज़्यादा तो मैं अपने आप को खुद ही मार लिया. पहले यहाँ आने से मर जाता था.
क्या है ये वही वाला जगह है कि जहाँ आना मना था? नहीं, वो दूसरा है। उसी के जैसा वाला, लेकिन ये क्या है, पर्सनल मॉड है। तो क्या मतलब यहाँ जगह की वजह से तू मर जा रहा है या फिर टॉक्सिक है कुछ वहाँ पे? हाँ टॉक्सिक है, तो मेरे को अभी वो पावर मिला कि यहाँ पर मैं आ सकता हूँ, पहले नहीं थे मेरा पावर। बट आई थिंक इतना ही है ये। एक्चुअली ये उस दिन जहाँ घूम रहा था ना, वहाँ पर एक मिशन था, मैं बहुत पहले पहुँच गया था वहाँ पर। तो अभी मेरे को कहाँ जाना है? और ऊपर चढ़ रहे बाबा। देख रहा कितना बड़ा, यहाँ मारा वहाँ थोड़ा सा मारा। अरे छोड़, मैं इसमें ये भी तरीका आजमाता हूँ टेलीपोर्ट करने का। अब तो हो गया इस एरिया में, अब वापस कौन उस टेलीपोर्टेशन मतलब वो उस कंट्रोल पॉइंट तक जाएगा क्विट करके? ये गेम के पहुंच गए। गेम को गेम जैसे खेल रहा हूँ, गेम की सारी शक्तियाँ यूज कर रहा हूँ। ये शक्ति तो सोच के नहीं बनाया होगा वो। ओ भैया, स्पीड रनर से लेके पूरा यूज करते हैं मालूम, कट सीन में कैंसिल कर देंगे। ए मेरे को उधर जाना कि इधर जाना? इधर ही जाना। कट सीन काउंट होता है? अगर अनस्किपेबल कट सीन है तो यस। ये मुरझाया हुआ क्यों है इस? जनरली यहाँ पर कुछ मुरझाया हुआ होता नहीं है हीरो में। यहाँ पे कुछ था पता है, गोल सा आया था। ऑपरेशन सेंटर। The third thing. The sound made darker, the darkness made louder. Hartman was stretched, like a worm through time. The third thing was a monster. Now we crashed out of darkness toward Faden. तेरा हेल्थ चला गया है? कैसे? नहीं किया मेरा हेल्थ। दिख तो रहा है थोड़ा सा से। नहीं ना, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे डार्कनेस है। लाइट चाहिए मेरे को, लाइट। हाँ नहीं नहीं ठीक ठीक। चल बंद करो, बाद में लगाता हूँ। वहाँ पे कुछ लड़ाई भी है। जब भी रेड लाइट है मतलब वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होना।